Hello, shining stars. A very warm welcome to your SST class. And here I am, your mentor, Prajita, with a new chapter of Geography, Class 6, that is India, Climate, Natural Vegetation and Wildlife. आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया का क्लाइमेट, इंडिया का नेचुरल वेजिटेशन क्या है एंड वाइल्ड लाइफ कैसे. So, let's start it, children. In this chapter, we are going to read about the climate of India, cycle of seasons, rainfall, natural vegetation, conservation of forests, wildlife in India, and conservation of wildlife. So, let's start it. Are you all ready? Okay. We see hour to hour or day to day change in atmosphere. अभी एटमॉस्फेयर में हम रोज कुछ ना कुछ बदलाव देखते हैं या कुछ घंटों में ही एटमॉस्फेयर में बदलाव होने लगता है. इट इज हॉट ड्यूरिंग द डे बट इट इज कूल इन द इवनिंग. मॉर्निंग जब आप उठते हैं तब थोड़ा प्लेजेंट रहता है, फिर जब दिन आगे चलता है तो डे टाइम में बहुत गर्मी हो जाती है एंड फिर धीरे धीरे जब शाम होने लगती है तो फिर से जो वेदर है वो कूल होने लगता है. This day-to-day or hour-to-hour change in the atmosphere is termed as weather. अभी मैंने बोला ना weather change होने लगता है, तो ये जो day-to-day और hour-to-hour atmosphere में जो भी changes होते हैं उसे कहा जाता है weather. When weather remains the same for a long period of time in a particular area, it is termed as climate. अब जब weather एक तरह का वेदर जब बहुत लंबे टाइम के लिए एक जगह पे रहता है तो उसे कहा जाता है क्लाइमेट. इट इज द एवरेज कंडीशन ऑफ वेदर. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स. पूरे वर्ल्ड में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह का क्लाइमेट होता है. हियर वी विल स्टडी अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. तो यहाँ इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंडिया के क्लाइमेट के बारे में. क्लाइमेट ऑफ इंडिया. India has a wide variety of land features, so the climatic conditions in India vary from one place to another. अब इंडिया में बहुत वाइड वैरायटी है लैंड फीचर्स, तो इसलिए इंडिया के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो वेरी करता है, अलग अलग होता है मुझे. The interior parts experience a continental type of climate, where winters are very cold and summers are very hot due to their distance from the sea. जो इंटीरियर पार्ट्स होते हैं, जो इंडिया के इंटीरियर पार्ट्स हैं, वहां पे कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है क्योंकि वो सी से दूर होते हैं, समुद्र से दूर होते हैं. तो वहां पे जो विंटर्स है, सर्दियां बहुत ठंडी होती हैं और जो गर्मियां हैं बहुत गर्म होती हैं. दिस इज कॉल्ड द एक्सट्रीम क्लाइमेट. इसे कहते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट, जहां बहुत ज्यादा ठंड या बहुत ज्यादा गर्मी है. Along the coastal areas, the climate is moderate all the year round. अब coastal areas में जो climate है वो कैसा होता है? Moderate होता है पूरे साल. This type of climate is called equable climate. और इस तरह के climate को क्या बोला जाता है? Equable climate. The southern part of India lies near the equator, due to which it remains warm throughout the year. अब जो सदर्न पार्ट है इंडिया का वो इक्वेटर के पास है, तो इसलिए वहां क्या रहता है, कैसा रहता है क्लाइमेट? वार्म रहता है पूरे साल. मेघालय रिसीव्स हेवी रेनफॉल while Rajasthan remains hot and dry. Despite this variety in climates, India's climate is described as the tropical monsoon type of climate. यहाँ पे क्लाइमेट वैरायटी ऑफ क्लाइमेट्स है, लेकिन फिर भी इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको क्या जिस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है? एज ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द कंट्री ऑलमोस्ट मिडवे. इंडिया के मिडवे से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, डिवाइडिंग द कंट्री इनटू द सदर्न हाफ व्हिच लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन एंड नॉर्दर्न हाफ व्हिच लाइज इन द टेम्परेट जोन. The monsoon winds which rise from the Arabian Sea, अब अरेबियन सी जो मानसून विंड्स जो राइज करती हैं, and the Bay of Bengal और अरेबियन सी से जो मानसून विंड्स ऊपर उठती हैं, give a monsoon type of climate to the whole of India. ये पूरे इंडिया को एक मानसून की तरह का क्लाइमेट देती है.
See, these are the climatic zones: cold, then hot and dry, temperate, warm, humid. Now, fact to know, the weather reports are prepared by the meteorological department. Meteorological department जो है वो weather reports prepare करते हैं. Factors affecting climate. अब climate को कौन से factors affect करते हैं? The climate of a place is affected by 4 factors. कौन से? Latitude, altitude, distance from the sea, and the direction of the winds. Latitude of a place determines the hotness or coolness of a place. अब जो किसी जगह का जो लैटिट्यूड है वो क्या डिटरमाइन करता है कि वो जगह कितनी हॉटनेस है, वहां पे कितना हॉट है या कितना कूल. प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर वेरी हॉट, और जो जगह इक्वेटर के पास है वो बहुत गर्म है. द प्लेसेस अवे फ्रॉम द इक्वेटर आर मॉडरेट, while the places near the poles are very cold. अब जो जगह इक्वेटर से दूर है वहां पे मॉडरेट रहता है, और जो जगह पोल्स के पास है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास, वो ठंडी रहती है. As the height increases, temperature decreases. जैसे जैसे हाइट बढ़ता जाता है टेम्परेचर कम होता जाता है. Distance from the sea determines the humidity in the climate and the direction of winds decide the pattern of rainfall. जो सी से डिस्टेंस है उससे तो ह्यूमिडिटी डिटरमाइन किया जा सकता है क्लाइमेट का, और डायरेक्शन जो विंड्स का डायरेक्शन होता है वो डिसाइड होता है पैटर्न. उससे क्या डिसाइड होता है? रेनफॉल का क्या पैटर्न. नाउ द साइकिल ऑफ सीजन्स. द 4 चीफ सीजन्स इन इंडिया आर कोल्ड और विंटर सीजन, वो रहता है दिसंबर टू फरवरी. These are the months of cold and winter. ये सीजन होते हैं, कोल्ड एंड विंटर सीजन, दिसंबर से फरवरी तक. हॉट और समर सीजन मार्च टू मई. साउथ वेस्ट मानसून और रेनी सीजन जून टू सितंबर, एंड सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून दैट इज अक्टूबर टू नवंबर. Fine, children. Now, fact to know, the word monsoon is derived from the Arabic word mawsim, which means season. Arabic word है मौसम, उसका मतलब होता है season. Winter. The sun rays do not fall directly in this season, which lowers the temperature in North India. अब क्या होता है, जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली फॉल नहीं करती हैं इस सीजन में, विंटर्स में, और इससे क्या होता है, जो नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर है वो लोअर डाउन हो जाता है. In this season, cool, dry winds blow. The days are warm and nights are cold. अब दिन तो गर्म रहते हैं और जो रातें होती है वो ठंडी हो जाती हैं. December and January are the coldest months. सबसे ठंडे months कौन से होते हैं? December and January. The winds blow from north to south. When these winds blow over the Bay of Bengal, they are moisten and bring rain to the coastal areas of Tamil Nadu. Now, summer season. The sun rays fall directly in this season. इस season में sun rays directly पड़ती हैं, which raise the temperature high. और इससे क्या होता है, जो temperature है वो बहुत गर्म हो जाता है, high हो जाता है temperature. Hot and dry winds called loo blow over North India. North India में लू चलने लगती है. The pre-monsoon winds blow from the Arabian Sea, which cause rain in Kerala and western coastal areas. These rains are called mango showers, और इसे mango showers कहते हैं, as they ripen the mango crop. ये mango crop को ripen करते हैं. Now, seasons of southwest monsoon. This season is very important. The crop production depends on it. इस पे crop का production depend करता है इस season. Early arrival of monsoon results in floods, while late arrival results in droughts. अब अगर मानसून जल्दी आ जाता है तो बाढ़ आ जाती है, और अगर मानसून लेट हो जाता है तो सूखा पड़ जाता है. While the timely arrival of monsoon is very beneficial for crops, लेकिन अगर मानसून बिल्कुल टाइम पे आता है तो वो क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छा है. The monsoon winds rising from the Arabian Sea brings rain to the western coastal areas and move further to the north. The monsoon winds rising from Bay of Bengal strike the Bengal coast and move towards Meghalaya,
where they are deflected towards the north due to high Himalayas. अब जो मॉनसून विंड्स जो बे ऑफ बंगाल से राइज करती हैं, वो बंगाल कोस्ट को पहले स्ट्राइक करती हैं, फिर वहां से कहाँ मूव करती हैं? मेघालय, एंड वहां से डिफ्लेक्ट होके वापस डिफ्लेक्ट हो जाती हैं. क्यों डिफ्लेक्ट होती हैं? क्योंकि वहां पे हाई हिमालयास है, तो वहां से वो डिफ्लेक्ट हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्थ. सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून. After the monsoon winds have exhausted themselves of water, they tend to move from the mainland to the sea. अब जब monsoon winds exhaust हो जाते हैं water से अपने, तो वो कहाँ move करती है? mainland से sea की तरफ move करती है. The winds are less humid. The climate changes from hot to dry, cold season. This season is called the season of retreating monsoon. South India experiences rainfall during this season. और इस सीजन में जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, वो रेन्स एक्सपीरियंस करते हैं. रेनफॉल. द मॉनसून ब्रिंग्स मोर देन 3/4 ऑफ रेन्स इन इंडिया. मॉनसून ही 3/4 रेन लाता है इंडिया. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज नॉट इवन. जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडिया में इवन नहीं है. वी कैन डिवाइड इंडिया इनटू 4 मेजर जोन्स डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम इंडिया को 4 पार्ट्स में, 4 मेजर जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं. कौन से हैं वो? हेवी रेनफॉल. द एरियाज रिसीविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल कैन बी सेड टू बी द एरियाज अंडर हेवी रेनफॉल. These areas, अब ये एरियाज कौन से हैं? वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न कोस्टल एरियाज, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, etc. Moderate rainfall. The areas receiving less than 200 centimeter but more than 100 centimeter rainfall can be said to be the areas under moderate rainfall. These areas include eastern Uttar Pradesh, foothills in Punjab, Odisha and parts of Madhya Pradesh. ये areas हैं जहाँ पे moderate rainfall होता है. Low rainfall. अब कहीं कहीं जगह ऐसी है जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है. The areas receiving less than 100 centimeter but more than 50 centimeter can be said to be the areas under low rainfall. जहाँ पे जिन areas में 100 centimeter से कम और 50 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होती है, वो एरियाज आते हैं अंडर लो रेनफॉल. These areas include, अब कौन कौन से एरियाज हैं ये? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान, parts of Punjab and the hilly Deccan areas. Scanty rainfall. The areas receiving less than 50 centimeter rainfall can be said to be the areas of scanty rainfall. और जिन एरियाज में 50 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होता है वो है स्कैंटी रेनफॉल, मतलब वहां बारिश ना के बराबर. These areas include, अब ये कौन कौन से एरियाज हैं? पार्ट्स ऑफ गुजरात, वेस्टर्न राजस्थान, सदर्न हरियाणा, साउथ वेस्टर्न पंजाब, लद्दाख एंड पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश. कौन से हैं वो? लाहौल स्पीति एंड किन्नौर. मौसनराम इन मेघालय इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया. सबसे ज्यादा वेट प्लेस जो है वो है मौसनराम इन मेघालय. इट रेन्स ऑलमोस्ट डेली. वहाँ डेली बारिश होती है, तो वो हमेशा वेट रहता है. दिस इज द रेनफॉल. हाउ कितना कितना रेनफॉल इंडिया में कहाँ कहाँ पे होती है. नाउ द नेचुरल वेजिटेशन. Natural vegetation is the forest cover that grows naturally without human interference. Human का कोई interference नहीं होता है और natural vegetation होता है जो forest में अपने आप उगती है. About 1/5 of India's land is covered by forest. India का 1/5 land जो है वो forest से covered है. In India, natural vegetation can be broadly divided into 5 major divisions. अब इंडिया में नेचुरल वेजिटेशन को 5 मेजर डिविजन्स में डिवाइड किया जा सकता है. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट. नाउ लेट्स डिस्क्राइब these
Read about these forests. Tropical evergreen forests. These are also called rainforest. इनको rainforest भी कहा जाता है. These are found in the areas where heavy rainfall, the Western Ghats and northeastern hilly regions. ये कौन से areas हैं जहाँ heavy rainfall होता है. An evergreen forest remains green throughout the year because the trees do not shed all their leaves at one time. अब ये जो evergreen forest हैं, ये हमेशा ही green क्यों रहते हैं? क्योंकि ये पूरे साल green रहते हैं, क्योंकि ये अपने सारे पत्ते इसके नहीं झड़ते हैं एक ही टाइम. The important trees are rosewood, mahogany, and ebony. Fine. This is the evergreen forest. हमेशा हरियाली रहती है. Tropical deciduous forest. This is a deciduous forest. Deciduous forests are found in the areas with moderate rainfall like Eastern Ghats, foothills of Himalayas, Odisha, Assam, and West Bengal. A deciduous tree sheds all its leaves at one time every year. अब जो deciduous trees होते हैं जहाँ पे moderate rainfall होता है उसको deciduous forest कहते हैं. और यहाँ पे जो deciduous trees होती हैं वो अपने सारे पत्ते उसके झड़ जाते हैं one time में ही. एक साल में एक बार सारे पत्ते झड़ जाते हैं. The important deciduous trees are, अब कौन कौन से trees हैं deciduous? Sal, teakwood, teak, sandalwood, bamboo, mahua, shisham, and shakti. Next is the tidal forest. These are also called mangrove forests. इनको mangrove forest भी कहा जाता है. These can survive in saline water. ये saline water में भी survive कर जाते हैं ये forests. These tidal forests are found near the sea coast के पास मिलते हैं ये tidal forests. The sea tides help in the growth of these trees. अब जो sea से tides आती हैं, उसमें जो पानी आता है, वो इनको help करता है grow करने में. We find these forests in West Bengal, where the Ganga and the Brahmaputra have formed the delta named Sundarbans. जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र ने डेल्टा फॉर्म किया है जिसका नाम है सुंदरबंस और वो है वेस्ट बंगाल में. वहां ये फॉरेस्ट देखने को मिलती है. द इम्पोर्टेंट ट्रीज हियर इज, अब इसके ट्रीज कौन कौन से हैं, कौन कौन से ट्रीज उगते हैं यहाँ? सुंदरी, आफ्टर विच दिस डेल्टा हैज बीन नेम्ड. सुंदरबंस रखा गया है इस डेल्टा का नाम. नाउ कम्स द थॉर्नी फॉरेस्ट. Thorny forests are found in areas with scanty rainfall, जहाँ बहुत कम rainfall होती है. We can find these forests in Rajasthan, some parts of Punjab, Haryana, Western Ghats and Gujarat. यहाँ ये thorny forests मिलते हैं. The important trees in these forests are, अब इस forest के important trees कौन से हैं? Kikar, babool, cactus, date palm, prickly pear, besides other bushes and shrubs. जिनमें थॉर्न होता है. थॉर्नी नाम से ही पता चल रहा है. कॉनिफेरस फॉरेस्ट. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड माउंटेन फॉरेस्ट. अब कॉनिफेरस फॉरेस्ट को माउंटेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है. दीज आर फाउंड इन द हिमालयाज. देयर टाइप वेरी अकॉर्डिंग टू द हाइट. हाइट के अकॉर्डिंग उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं. द ट्रीज ऑफ सेदार, चिर, फिर, पाइन एंड देवदार आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट. अब कॉनिफेरस फॉरेस्ट में ये trees मिलते हैं. A coniferous tree has conical leaves which do not allow the snow to settle on them. Conical leaves होते हैं उनके बिल्कुल नीडल की तरह, कोन की तरह. तो उसमें क्या होता है, स्नो जमती नहीं है, फिसल जाती है. Conservation of forests. अब फॉरेस्ट का कंजर्वेशन. Our life is dependent on trees directly or indirectly. हमारी जो लाइफ है ह्यूमन बींग्स की वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रीज पे डिपेंडेंट है. They give us oxygen, medicines, food, fuel, rubber and other things. ये सारी चीजें हमें ट्रीज से मिलती हैं. Besides, they help to protect our environment. ये ट्रीज हमारे एनवायरनमेंट को भी बचाती हैं. They bind the soil and thus prevent soil erosion. A forest is also a natural habitat for a wide variety of animals, birds, and insects. Ideally, 1/3 of the total land area should be under forest. However, in India, only about 1/4 of the land is under forest.
वैसे आइडियली अगर देखा जाए तो 1/3 जो टोटल लैंड होता है उसका 1/3 एरिया जो है वो फॉरेस्ट में होना चाहिए, लेकिन इंडिया में ओनली अबाउट 1/4 ऑफ द लैंड इज अंडर द फॉरेस्ट. लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन कॉजेज मेनी प्रॉब्लम्स. अब इतने बड़े स्केल पे जो डिफॉरेस्टेशन होता है, पेड़ों की कटाई होती है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. द गवर्नमेंट रन्स वन महोत्सव इन ऑर्डर टू प्लांट मोर ट्रीज. अब गवर्नमेंट ने वन महोत्सव भी चलाया हुआ है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ट्रीज प्लांट किए जाए. Many social organizations are also helping in this cause. The Chipko movement was started by Sundar Lal Bahuguna in 1974 to protect the green cover. अब सुंदर लाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन शुरू किया था, चिपको मूवमेंट शुरू किया था 1974 में, जिससे कि ट्रीज को बचाया जा सके. You should plant trees on every available space. जहाँ भी स्पेस मिलता है हमें एक ट्री प्लांट कर देना चाहिए. The places along roads and railways are ideal places for plantation of trees as they absorb the pollution caused by the vehicles. अब जो जगह रोड्स के साइड पे, रेलवेज के आसपास होती हैं, वो आइडल प्लेस होते हैं ट्री लगाने के लिए, क्योंकि ये जो ट्रीज है वो यहाँ से जो पोल्यूशन होता है, रोड्स पे जो व्हीकल्स का पोल्यूशन होता है, रेलवेज में जो धुआं होता है, वो सब पोल्यूशन जो है वो ट्रीज एब्जॉर्ब कर लेते हैं. नाउ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया. इंडिया में वाइल्ड लाइफ, इंडिया का वाइल्ड लाइफ कैसा है? इंडियाज वाइल्ड लाइफ इज इक्वली डाइवर्स which comprises animals, birds, insects, fish and reptiles. अब इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ है वो भी डाइवर्स है, जिसमें कि एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स, फिश और रेप्टाइल्स हैं. Many of these species are peculiar to India, such as swamp deer. ये इंडिया में ही मिलते हैं. Four-horned antelope. Then Kashmir stag, cheetal, nilgai, one-horned rhinoceros, and Indian lion, Indian bison and many more. ये सब इंडिया में ही मिलते हैं. See, nilgai is Indian bison. India is rich in biodiversity. More and many types of reptiles are found in India. बहुत अलग-अलग तरह के reptiles मिलते हैं इंडिया में. India is the only country to have both tiger and lion. इंडिया ही एकमात्र एक देश है जहाँ पे टाइगर भी है और लायन भी. Now, conservation of wildlife. Hunting wild animals for food and skins have endangered a lot of animals. अब फूड के लिए या स्किन के लिए उनका हंटिंग किया जाता है एनिमल्स का, उससे एनिमल्स की जो लाइफ है वो बहुत डेंजर में आती है. Many of which are already extinct, while many others are critically endangered. अब बहुत सारे तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, गायब हो गए हैं बहुत सारे एनिमल्स, तो इतना हंटिंग हुआ है, और कुछ अब डेंजर लाइन पे आ गए हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं. Deforestation and construction activities too have caused a lot of harm to wildlife. Wildlife को deforestation और जो construction of buildings है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ. Many steps have been taken to conserve wildlife. अब वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए थे. At present, there are more than 166 national parks, 490 wildlife sanctuaries, and 27 tiger reserves in India. Hunting of many animals has been banned by the law. और कानून ने बहुत सारे एनिमल्स के हंटिंग को बैन लगा दिया, शिकार को उनके बैन लगा दिया. You on your part can also help to conserve wildlife. हम सभी अपने अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं इस वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन में. You can refuse to buy that things which are made of the animal parts. हम खुद को कैसे रोक सकते हैं? उन चीजों को ना परचेज करें जो कि किसी भी एनिमल के किसी पार्ट से बना है. The Wildlife Week is observed in the first week of October every year. और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया जाता है. You can tell the importance of wildlife to the people during this week. और इस वीक में जब ये वाइल्ड लाइफ वीक चलता है, इस वीक में हम बहुत सारे लोगों को अवेयर करा सकते हैं कि
वाइल्ड लाइफ की क्या इम्पोर्टेंस है ये उनको बता सकते। So these are the national parks, wildlife sanctuaries and bird sanctuaries in India. कहाँ पे हैं? Fact to know: the animal and plant species are categorized as thus: extinct species have already been destroyed, endangered species are under serious threat of extinction. अभी बताया मैंने आपको, जो extinct हो गए हैं वो तो गायब ही हो गए हैं, जो endangered species है वो बिल्कुल बॉर्डर पे आ गए हैं एक्सटिंक्शन के. Vulnerable species can become endangered if care is not taken. Common species are found in abundance in their habitat. और जितने भी common species हैं वो अपने अपने habitat में बहुत abundance में मिलते हैं. So children, let's revise what we have done, what we have read in this chapter. क्या पढ़ा अभी हमने? Important facts. India has two types of climates, extreme and equable. दोनों तरह के क्लाइमेट हैं, but India's climate can be called the tropical monsoon. The factors which affect a place's climate include latitude, altitude, distance from the sea, and direction of winds. The four seasons in India are winter, summer, monsoon, and retreating monsoon. The amount of rainfall varies in different parts of India. Natural vegetation comprises of trees, shrubs, and grasses which grow on their own. We have natural vegetation. There are 5 types of forest in India: evergreen forest, tropical deciduous forest, tidal forest, thorny forest, and coniferous forest. Efforts should be made to conserve forest. Forest को बचाने के लिए efforts करने चाहिए. India has a variety of wildlife and we should make effort to conserve it. क्योंकि इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत वैरायटी है वाइल्ड लाइफ. सो हमें हमेशा ये प्रयत्न करते रहना चाहिए कि किस तरह से हम इनको बचा सकें. ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज हियर. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. टिक द राइट ऑप्शन. लू इज डैश विंड. लू कैसी विंड होती है? कोल्ड एंड ड्राई, कोल्ड एंड वेट, हॉट एंड ड्राई. Loo is hot and dry wind. Okay. The distribution of rainfall in India is. India में rainfall का जो distribution है वो कैसा है? Even, uneven, none. It's uneven. Another name of mangrove forest is thorny forest, tidal forest, coniferous forest. Mangrove forest को tidal forest भी कहा जाता है. Dash forests are also called mountain forest. Tidal, coniferous, thorny. कौन से फॉरेस्ट को माउंटेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है? It's the coniferous forest. The Wildlife Week is observed in the first week of October, September, November. कब मनाया जाता है वाइल्ड लाइफ वीक? कौन से मंथ के फर्स्ट वीक में? अक्टूबर. Take October. Okay. Now children, write T for true and F for false. Weather and climate are two names for the same thing. Yes, this is true. Mango showers are caused in winters. No, false. The important deciduous trees are sal, teak, bamboo, etc. True. Conservation of wildlife is not important. False. It is very important. The Wildlife Week is observed in the first week of August. False. First week of October. Now fill in the blanks. In India, climate is described as the tropical monsoon type of climate. Tropical monsoon type of climate. Okay. The areas receiving less than 50 centimeter rainfall are called scanty areas. Scanty rainfall areas. A dash tree sheds all its leaves at one time every year. A deciduous tree. Dash can survive in saline water. Tidal forest can survive in saline water. And the last one is, you should plant tree on every
कहाँ प्लांट करना चाहिए ट्री? ऑन एवरी अवेलेबल स्पेस, जहां भी जगह मिले, अवेलेबल स्पेस, जहां भी जगह मिले वहां पे हमें ट्री प्लांट करना चाहिए. Okay, children? So this was the end of the chapter, and stay tuned for the new video. Again, we'll meet with a new chapter, we'll read a new chapter and something more interesting to be learned. So till then, be happy, stay blessed. Bye.